So today we will study a very important topic called service. Okay. So there are two types of serve: high serve and low serve. Okay. So high serve is used in singles to move the player to the back court. The aim is to open up the court for next shot. The aim is to open up the court for the next shot. Okay, be cautious if using in doubles. So generally we use singles high serve to move the player to the back court so that the court is open and you have enough space left on the court for your next shot. Okay. Then another serve is called low serve. This serve is done when you want your opponent to lift the shuttle, commonly used during doubles, but can also be used in singles if your opponent attack is too strong. Generally, this serve is done in doubles. So also you can do in singles if you see that your opponent is smashing. He has a good power, he can smash. So then you can do a low serve. Generally nowadays many players are doing low serve because many players have good smashing power. So they use low serve so that they can maintain an attack, pure attack throughout the game. Fine. Any question? No, sir. Okay, so now we move to next slide. Okay, then it's how to execute forehand and backhand serve. Okay, in forehand serve, stand 2 or 3 feet behind the short service line. Short service lines, you have to stand 2-3 feet behind short service line. Okay, and with your non-racket leg should point toward the opponent court. Like if I'm a right-handed, so my non-racket leg will be the left one, and if I'm a left-handed player, then my non-racket leg would be right one. Okay, your non-racket leg should point toward the opponent court, and the racket leg means I am a right-handed, so my racket leg will be the right leg, and the racket leg should point toward the badminton post. So it's like it will be made like a V. So one leg is pointing toward the court and other leg is pointing toward the pole. Okay. Now hold the shuttlecock ahead your body. You have to hold the shuttlecock ahead of a body. Then contact the shuttle at the higher point. Contact the shuttle at the higher point but below the waistline. This is the important part. Contact the shuttle at the higher point but below the waistline, because above the waistline it will be a fault. It will be a service fault if you hit the shuttle above your waistline. And now hit the shuttlecock so that it crosses the net. So we have to hit the shuttlecock with such a power and such an angle that it should cross the net. Okay, so you can see this is the diagram of the forehand serve. So the one of the left leg is toward the opponent in the first image, and the racket leg is toward the pole. Okay, now you have to hold the shuttle ahead of the body, and with a full swing we have to hit the shuttle below the waist and at the topmost angle. But in this picture the topmost point is very low, so we can hit it little bit above also. And we have to hit the shuttle at an angle so that it can travel to an upward direction so that it crosses the net. Clear? क्लियर? Yes, sir. आ गया समझ में? Yes, sir. अब नाउ बैकहैंड सर्व.
Backhand serve nowadays, many players uses backhand serve because, as I told you earlier, that it's when you're doing a low serve, the opponents generally lift the shuttle. So if you are attacking player, then you have to do a low serve. So in backhand serve, stand in a comfortable and balanced position with the racket in the front of the body. You have to stand in a comfortable position, and your body should balance on both of your feet, and your racket should be always in the front of your body. Lead with your racket leg and place your non-racket leg behind. In this case, you have to put your racket leg in front and your non-racket leg behind. Carry out a short back swing. Carry out a short back swing, then bring the racket forward. Hold the shuttlecock from the tip in the front of the waistline. Push the shuttlecock with the racket face and try to make the shuttlecock pass over the net. For better serve shorten the grip of the racket. For better serve control, shorten the grip of the racket. Means you have to, for the backhand serve, to have a good control, you have to hold the racket from the neck of the grip. From the there's a V part, there's a circular part ahead of the grip. So you have to hold the racket from that side. Similarly like this. Hold the racket the V grip. Hold shuttle by feather below the waist. Right leg, the racket leg should be racket leg should be forward, and your non-racket leg will be just behind the racket leg. Release the shuttle and flick the wrist. You have to release the shuttle in the air, and you have to just use your wrist to flick the shuttle in upward direction. And again, you have to hit the shuttle in that angle that it crosses the net and it's away from the opponent. Clear? Backhand serve. Yes, sir. कोई डाउट तो भी पूछ लो. This is an important part, but I can't tell you physically in the online session. When you come back to the campus, then I'll let you know proper in physical mode. Okay. Okay, sir. So the next is the trajectory of the serve. The trajectory of the serve is very important. So in the first picture, you can see forehand serve. This is the trajectory of a forehand serve. So trajectory one is for single serve, high single serve, and second trajectory is of double serve. So double serve is lying little bit ahead of the back gallery. If the service lies in the back gallery, then it is out. Then service is out. Okay. So this is the trajectory of a singles high serve. In the second picture, you can see the trajectory of a low serve. Forehand or backhand, the trajectory would be same. In the third picture, you can see the trajectory of a flick serve. Flick serve can be with both forehand or backhand. Okay. Again, in the fourth picture, you can see the trajectory of the drive serve. The trajectory of the drive serve will also be same in forehand or backhand. Clear? Yes, sir. Now next, there are some tips and tricks of a good serve. Service is a very important part. So there are some tips and some tricks for a good serve which you have to be applying in your game, on which you have to see the situations where you can apply these tricks. So the first one is make the high serve travel a good distance upward. Make the high serve travel a good distance upward and fall at the rear end of the court so that your opponent moves to the end of the court. बेस जो हमारी जो हाई सर्व होगी, हमको उसकी ट्रैजेक्टरी हमको इतना हाई रखना है और इतनी पावर उसमें हमको देना है ताकि वो बैक एंड रियर एंड जो होता है कोर्ट का, जो लास्ट लाइन होती है हमारी, वहां तक शटल ट्रेवल करे. उससे क्या होगा, जो हमारा जो प्लेयर होगा वो भी मूव करेगा पीछे तक. ओके. जब प्लेयर गया लास्ट कोर्ट तक तो उसके पास
हमारे पास ओपन कोर्ट खुल गया. Okay, Okay, sir. the low serve should be close to the net and near the short service line. जो आप लो सर्व करोगे इट शुड बी क्लोज टू द नेट, जितना नेट से क्लोज होगा उतना अच्छा है. if the service is not close to the net, the opponent will tap, obviously टैप कर देगा सर्विस को. और शॉर्ट सर्विस लाइन के आसपास होना चाहिए, ताकि शॉर्ट सर्विस लाइन से आगे गिरेगा तो ऑब्वियसली आउट होगा. और पीछे अगर आप दे दोगे तो फिर भी वो पीछे इजीली टैप कर सकता है या डिफेंसिव कोई शॉट खेल सकता है. तो इसलिए इट शुड बी क्लोज टू द नेट एंड नियर टू द शॉर्ट सर्विस लाइन. ओके, नाउ फ्लिक सर्व टू बी यूज्ड एज अ सरप्राइज फॉर द अपोनेंट विथ सेम एक्शन एज लो सर्व. फ्लिक सर्व बहुत एक इंपॉर्टेंट सर्व होता है सिंगल्स में, डबल्स में, बिकॉज इट एक्ट्स लाइक अ सरप्राइज कि प्लेयर रेडी है, प्लेयर इज रेडी फॉर टेकिंग अ लो सर्व एंड यू जस्ट with your wrist power on with your tactics you can push the shuttle backward. So it's like a surprise for the opponent. So keep changing the variety of the serve during the match. So it's very good trick if you change the variety of the serve. Sometimes you can do a low serve, sometimes you can do a high serve, sometimes you can flick a drive. तो वी हैव टू चेंज, हमको बार बार सर्विस को चेंज करते रहेंगे तो प्लेयर क्या करेगा, प्लेयर अपोनेंट जो होगा वो अडेप्ट नहीं कर पाएगा. जैसे क्रिकेट में आप देखते हो जनरली जो फास्ट बॉलर्स होते हैं हमेशा फास्ट बॉलिंग ही नहीं करते हैं, कभी कभी स्लोवर वन डालते हैं, कभी बैक कटर डालते हैं, कभी ऑफ कटर डालते हैं. तो वो वैरायटी हो गया. अगर एक ही पेस पे अगर क्रिकेटर बॉल फेंकता जाएगा, पूरी 6 की 6 बॉल फेंक देगा अपनी, तो चेंज कुछ सरप्राइज प्लेयर को रहेगा नहीं, अपोनेंट तो इजीली कर लेगा. और अगर हम बीच बीच में सर्विस की हमारी वैरायटी चेंज करते रहेंगे तो हम देन देयर विल बी अ सरप्राइज एलिमेंट आल्सो. तो प्लेयर को पता नहीं चलेगा कि अभी नेक्स्ट अपोनेंट का मूव क्या होगा, छोटी करेगा या लंबी सर्विस करेगा, फ्लिक मार सकता है. ओके, नाउ इफ द अपोनेंट नेचर इज अटैकिंग, अगर आपके अपोनेंट एक अटैकिंग प्लेयर है, मतलब स्मैश मार सकता है, पावर अच्छी है, तेज स्मैश मार रहा है, हाफ स्मैश मार रहा है, तो ऑलवेज डू द लो सर्व. इफ द अपोनेंट नेचर इज अटैकिंग, डू द लो सर्व. ओके, सेम फॉर द टॉल प्लेयर्स, डू फ्लिक सर्व टुवर्ड द बॉडी ऑफ द अपोनेंट. अगर प्लेयर हमारा टॉल है तो उसको फ्लिक सर्व करना है टुवर्ड द बॉडी, या पुश सर्व करते हैं हम बॉडी पे, बिकॉज tall players will be facing difficult for receiving the shuttles towards the body. बॉडी से दूर वो इजीली खेल पाएगा पर बॉडी के पास नहीं खेल पाएगा शटल कभी, क्योंकि लंबा प्लेयर है, थोड़ा झुकने में दिक्कत होता है, हाथ लंबे होते हैं और उतनी रिफ्लेक्सेस उसके टॉल प्लेयर के अच्छे नहीं होते हैं. तो टॉल प्लेयर को हमेशा हम या तो फ्लिक मारेंगे या तो उसकी फ्लिक हम बॉडी की तरफ मारेंगे. नाउ फॉर अ प्लेयर हैविंग अ शॉर्ट हाइट, डू अ फ्लिक सर्व टुवर्ड द बैक कोर्ट. अब अगर प्लेयर छोटी हाइट का है तो उसको हम फ्लिक मारेंगे टुवर्ड द बैक कोर्ट. छोटी हाइट का फ्लिक क्या होता है, फ्लिक की जो सर्विस होती है वो थोड़ा उसकी ट्रेजेक्ट्री छोटी रहती है. यू कैन सी द फ्लिक की थोड़ी ट्रेजेक्ट्री छोटी है और थोड़ी शॉर्ट डिस्टेंस पे रहती है. तो छोटा जो प्लेयर होगा, शॉर्ट हाइटेड प्लेयर होगा, यू विल बी नॉट एबल टू रीच द शटल प्रॉपरली. वो शटल पर प्रॉपर नहीं पहुंच पाएगा तो पीछे जाएगा वो. नाउ इन डबल्स ऑलवेज डू अ लो सर्व close to the T point. Always you have to, the basic is that in doubles if you are serving, to always do the serve on the T point, because from the T point, if you are serving towards in the T point, the return will be nearest to the first player. जो आपका जो पार्टनर होगा जो नेट पे आगे खड़ा होगा डबल्स में, उसके आसपास से निकलेगा शटल. जनरली तुम प्रैक्टिकली भी इसको आप देखना, अगर आप सर्विस करते हो, यू डू द सर्विस टुवर्ड द T point, तो द सर्विस विल गो नियर टू द योर पार्टनर. तो पार्टनर पे बहुत चांसेस होते हैं कि पार्टनर बीच में इंटरसेप्ट करके टैप करता है, बीच में पकड़ सकता है, फ्लिक मार सकता है, स्मैश मार सकता है. तो ऑलवेज ट्राई टू डू द सर्व टू द T point. ओके, तो आज का हमारा सर्विस का पार्ट तो इतना ही था.
Now, if you have some doubts, so you can just ask me. है कोई क्वेश्चन? No, sir. No, sir. क्लियर है सब कुछ? Yes, sir. ओके, चलो मैं कुछ वीडियोस भी तुमको शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में, तो उसको भी फॉलो कर लेना, उसको भी हम थोड़ा देख लेंगे। बाकी और अच्छे से तो जब तुम फिजिकली प्रेजेंट होगे तब जाके थोड़ा और डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। थोड़ा प्रैक्टिकली भी मैं कुछ वीडियोस बनाने की कोशिश करूंगा, फ्लिक सर्व की, ड्राइव सर्व की, तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे पोस्ट कर दूंगा, तो वहाँ पे देख लेना। ठीक है? Okay, Yes, sir. sir. ओके, बाय देन, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। Thank you, sir. Thank you, sir.